कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आने यूट्यूब चैनल में आप तमाम जितने भी दर्शक हैं, आपका बहुत बहुत दिली स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज का दिन एक बहुत ही विशेष है, यानी कि गांधी जयंती है। महात्मा गांधी जी आज के दिन पैदा हुए थे और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी याद को सेलिब्रेट करने के लिए बोलते आने की तरफ से ये एक विशेष एपिसोड का तैयार किया है हमने। और सुबह के 8 बजने वाले हैं, बज चुके हैं बल्कि। और सीधी इस वक्त जुड़ गई हैं मुंबई से प्रोफेसर मनाली लोंढे जी। मनाली लोंढे जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी वन एंड ऑल। जी। तो जितने बोलते आने के दर्शक पूरी वर्ल्ड ओवर हमको देख रहे हैं, मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि बोलते आने की मार्फत हिंदुस्तान की जो तहजीब है, अदब है, कल्चर है, सॉफ्ट पावर है, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज, एजुकेशनल टॉक्स, जिसकी मार्फत हम पैगाम प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन और एक सद्भाव, वर्ल्ड हार्मनी हम पैदा कर रहे हैं। इसमें लिविंग लेजेंड्स को हम बुलाते हैं, म्यूजिक से, डांस से, थिएटर से, लिटरेचर से, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं। और आज के इस पावन मौके के ऊपर कि महात्मा गांधी जी का हम जन्मदिन जब मना रहे हैं 2 अक्टूबर के दिन, बल्कि तो मैं ये कहूँगा कि कितनी बढ़िया 2 लाइनें कवि प्रदीप जी की याद आ रही हैं मुझे कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग संत तूने कर दिया कमाल। ये वो 2 लाइनें हैं जो कि हमेशा गूंजती रहती हैं पूरी दुनिया में। जब भी हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली है, 2 लाइनों और कमाल कर दिया। डॉक्टर मनाली लोंढे जी के बारे में आज बताना चाहूंगा कि ये इस विशेष प्रसारण में वो एक ऐसा अद्भुत, अनुपम, अजीब व गरीब टॉपिक लाई हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही एक सामायिक है, टाइमली है और आज की सबसे सख्त जरूरत हमारे युवा को है। बल्कि उस टॉपिक को वो लेकर आई हैं। उन्होंने खुद कहा कि जब मुझसे पहले डिस्कशन हो रहा था कि क्योंकि वो एक योग की एक्सपर्ट हैं, फिलॉसफी की एक प्रोफेसर हैं, एजुकेशन में बड़ा नाम है, रिसर्च, एकेडमिक्स और एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ वेरियस लिटरेरी कल्चरल प्रोग्राम्स फॉर सेवरल डिकेड्स शी हैज बीन देयर। ये टॉपिक बड़ा सुंदर है, आप सुनिएगा। रियल सेल्फी विद योग एंड एजुकेशन, कि वास्तविक या सच्ची सेल्फी जो है, आजकल हर इंसान देखिए कैमरामैन बना हुआ है। कैमरामैन की बिल्कुल कमी नहीं है पूरी दुनिया में। जहां भी देखो अपनी फोटो खींचते हैं, यूं सेल्फी ले रहे हैं। कोई कोई मौके ऐसे आते हैं कि छत पे चढ़े हुए हैं, यूं देख रहे हैं और गिर जाते हैं। ट्रेन के पास से जा रहे हैं, वहां पर गिर जाते हैं। ये गलत आदतें हैं। सच्ची सेल्फी लेने के लिए आज योग एक्सपर्ट, एकेडमिशियन और एडमिनिस्ट्रेटिव जिनकी बैकग्राउंड रही है, आज के दिन हमने बुलाया है प्रोफेसर मनाली लोंढे जी को, जो कि मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। शी इज, मैंने बताया कि प्रोफेसर हैं, फिलॉसफी, इंचार्ज प्रिंसिपल एस.के. सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, विद्या विहार, मुंबई में। और आप डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई भी रही हैं। अलावा इसके कई यूनिवर्सिटीज जो कि कॉलेजेस हैं, उनमें आप विजिटिंग प्रोफेसर भी रही हैं और बड़ा अच्छा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस रहा है। कई पब्लिकेशन हैं आपके नाम से, कई जर्नल्स में, मैगजीन्स में छपे हुए हैं। कई ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप्स
लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह दिए भी हैं और ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं मुख्तलिफ हिस्सों में दुनिया के। और इस सॉलिड बैकग्राउंड के साथ जिस तरीके से उनके बारे में मैं और बताता रहूंगा, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी बात बताइए, अब मैं जो दूसरी बात बताना चाह रहा हूं कि इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने बताया कि रियल सेल्फी विद योग एंड एजुकेशन, उसके ऊपर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसमें तमाम ऐसी वो बातें होंगी जो आप से सीखेंगे, आपके एक्सपीरियंस से सीखेंगे, जो कि हमारी दर्शन से, फिलॉसफी से, क्योंकि फिलॉसफी की प्रोफेसर हैं और योग की एक्सपर्ट है, उससे हमारी कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल्स पैदा हो सकती हैं जिसमें जैसे मान लीजिए हमारी क्रिएटिविटी है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसी स्किल्स होनी चाहिए, कैसे हमें सुनना चाहिए, जरूर नहीं है कि हम बात करते रहें, बोलते बोलते रहें, सुनिए भी, अडेप्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसा होना चाहिए, एम्पैथी, ये खास आप बताएंगे। एम्पैथी मतलब समानुभूति, सहानुभूति नहीं, समानुभूति। तो एम्पैथी पे करेंगे, यानी टोटल मैनेजमेंट ऑफ द योर ओन पर्सनैलिटी, जिसे सेल्फ कल्चर कह सकते हैं। सेल्फ, उस तमाम को लेके एक अपनी सेल्फी खींचिए और ये दुनिया को दिखाइए। तो इस मौजू को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये बताइए कि प्रोफेसर मनाली लोंढे जी मुंबई में हैं इस वक्त आप, और Yes, कैसा कैसा मौसम चल रहा है वहां पे? बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक भी बारिश हो रही है जोर हाँ, से, तो अच्छा लग रहा है। एंड इट्स नॉट ओनली इन मुंबई बट सर्वदूर, जहां महाराष्ट्र में जहां बाढ़ नहीं होती थी, लेकिन बहुत कम बारिश गिरती थी, वही भी वो इलाके में भी बारिश गिर रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे जो किसान लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौसम है ये। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी भी पूरी पूरी साल की जो खेती होती है उसके लिए बहुत अनुकूल रहे ये पर्यावरण, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमारा जीवन सबसे पहले उनके ऊपर निर्भर है। तो मैं समझती हूँ कि किसान और फार्मर इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर सोसाइटी एंड लाइफ। वेरी गुड। जैसे मैंने अपने नाजरीन को भी बताया कि एक वो मौजू या टॉपिक है कि रियल सेल्फी विद योग एंड एजुकेशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पे पहली बात मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमें गाइड कीजिएगा। देखिए कि एक जमाना इस वक्त बड़ी तेजी से, डिजिटाइजेशन के बाद बड़ी तेजी से चल रहा है, और हर लम्हा हम चेंज होते जा रहे हैं। यानी कि हमें खुद भी नहीं खबर है कि हम, हमारे बॉडी के सेल्स वगैरह कैसे कैसे चेंज होते, सूरत चेंज होती जा रही है और अचानक से हम चेंज होते जा रहे हैं। हमारी आदतें भी जो हैं, हमारी हैबिट्स हैं, वो कैसे फटाफट चेंज हो रही। पहले इतना टाइम नहीं लगता था। हमारे माँ बाप वगैरह हमारे जमाने में जब आज से 40-50 साल पहले सिखाते थे, भाई बुरी लैंग्वेज मत इस्तेमाल करो, बुरे कपड़े मत पहनो, बुरा खाना जल्दी से जो होता है फटाफट 2 मिनट में बन जाता है, ऐसा खाना मत खाओ, ऐसी। लेकिन आजकल यही चीजें लोग करने लगे हैं। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो चल रहे हैं, देखिए इन डेवलपमेंट से शहरियार साहब एक बड़े मकबूल शायर, उनका वो शेर याद आया मुझे कि जो बुरा था वो हो गया अच्छा कैसे, और वक्त के साथ में इस तेजी से बदला कैसे। देखिए जो बुरी बातें थी वो अब अच्छी लगने लगी हैं, वो बड़ी खराब, आयरॉनिक है। मैं ये चाहूंगा सबसे पहले बताइए कि ये इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताइए, रियल सेल्फी विद योग एंड एजुकेशन, और जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, किस तरीके से हम खुशियों के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम पीछे की तरफ और हम अपने को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस आयरनी पे बताइए। यस, सबसे पहले मैं बोलते आईने इनके ये कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है एंड यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स हियर। सो at the outset, I would like to thank you all first for giving me this opportunity. Thank you so much, sir. जी जी जी, थैंक यू। Coming back to our topic, that real selfie through yoga and education. अभी का जमाना है कि जहाँ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दिन ब दिन
अपने लाइफ में, it is making our life very comfortable. That is for sure. We cannot deny the enormous comforts which are given by scientific and technological development. But what has happened today, due to this, we are becoming slaves of technology. हमारा पूरा लाइफ जो है, जीवन जो है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही निर्भर हो गया है. Actually, if we consider a technology or a machine is for us. We are not for machines. But today, what is happening exactly? हमारा जो डिपेंडेंसी है टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है. Like if I forget my mobile at home, I feel so restless throughout the day. पहले जमाने में तो मोबाइल थे भी नहीं. तब तो हमारा जो 8 डिजिट्स का रेगुलर लैंडलाइन नंबर था, खुद का तो हमें याद ही था, लेकिन हमारे कितने सारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनका भी हमें लैंडलाइन नंबर याद था. अभी क्या हुआ है, पूरा का पूरा जो नंबर्स है वो पूरा मोबाइल में कैद है. एंड दैट माइट बी द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल, CELL. लेकिन ये जो सेल है वो जेल की तरह है. जेल को सेल भी बोलते हैं जी. तो हम खुद उसमें कैद हो गए हैं क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ रही है, हमारी डिपेंडेंसी. एंड मोबाइल इज नाउ राइट फ्रॉम अ very small child who is going to like primary school till the college and the post graduation and postdoctoral students. Everyone has a mobile. Even both are, suppose two friends go to a restaurant to spend time together. After 5 minutes, we will see that till the order comes, both of them are on their own mobiles, busy with their own mobile. इसलिए क्या हो रहा है कि जो आपस में जो संवाद होना चाहिए वो भी it is getting reduced day by day, and more time is spent on mobile. We must understand that though technology and science has given us enormous comforts, they are just for our use. We should not come under the control of the machines today, because ultimately man has created the machines. Machines have not created man. Okay, so mankind has to use those as machines. Mankind cannot be dependent on machine. और अभी हम भी देखते हैं, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पहले वो वीडियो लेता है वो एक्सीडेंट का. What we as a human being, we should go and help the victims of the accident. But hardly anybody think of that. So this is where we cannot consider it as a progress. The progress is only superficial. It is, of course, at the same time, I don't want to generalize this, but on an average, this is what happening today. हम घर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों माँ बाप दोनों भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं. घर में छोटा बच्चा होता है, वो घर में आते हैं तो बच्चा रोने लगता है because he wants to attract them. But both of them are tired and they think that yes, there is only one way that we can reduce our stress is television. Again, they are in front of some or the other screen. And throughout the day, the child is not with the parents and he wants to be with the parents. He wants to have affection and love from the parents. But both of the parents are busy with the serials. और उधर भी एक अच्छा किसी का डायलॉग चल रहा है and the child becomes very anxious, he becomes mischievous, and then he tries to attract the parents, but then the mother thinks, yes, it is a disturbance, I'm not able to listen to the dialogue of the serial, and then she shuts him up, which is also happening in some of the families today. In fact, it is a quality time that the parents should spend with the child, a very small child. But what is happening, of course, lockdown has now given rise to the screen exposure mode.
Okay, because everything was online, but that was where we could not have any control over that. That was necessity of the hour to be at home, and all the work could carry ahead with the help of the mobile or with the laptops, because everything was work from home. But again, it has given rise to the screen exposure at a very, very higher level. And therefore, what I feel that though machines are there, they are for our use. But today, the dependency has increased, and the interpersonal relationship, the communication, the dialogue between the two people have got reduced to a major extent. And I feel the any base of any relation, that if there is a strong base of trust, a strong base of communication, the healthy communication, then the bond becomes more strong. And I feel where it is something getting deteriorated due to a lot of screen exposure. बहुत And सही therefore, है। yeah, thank you, sir. जी जी जी, बहुत सही डिटीरियोरेशन वाली जो बात कह रही हैं आप। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बड़ी तालियां हमने बजाई पिछले कुछ साल पहले कि भाई डिजिटाइजेशन होने जा रहा हो रहा है और बिजलीकरण हो रहा है, हर चीज स्पीड पकड़ेगी। 2G आया, 4G आया, 5G आ रहा है, वगैरह वगैरह, इतनी तेज। तो देखिए, ये एक बड़ी आयरॉनिक या विडंबना इस पे एक लगी हुई है बात कि आप ये बताएं, डिजिटाइजेशन जो है, क्या ये अभिशाप है या वरदान है? इज इट अ बेन और बून? इस पे बताइए आप। I feel it all depends on how reasonably we use, how rationally we use it. So it will be both, because it is a blessing if we use it rationally. No doubt. See, today, if I have got caught somewhere and I need some help, then if I have a mobile, yes, that becomes a great help for me. But then if I don't understand the overuse of technology, see, being human beings, we have been blessed with the rational thinking. And it is a duty to differentiate between what is right, what is wrong, what is good, what is bad, what is virtuous, what is vicious. देखिए, And this is, ह्यूमन नेचर जो है, yes, तो हम इंसान हैं, हमारी प्रवृत्ति जो है पूरी वर्ल्ड ओवर, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वो ऐसा है कि आप तो बड़ी अच्छी बात बता रही हैं, लेकिन शिक्षा, वास्तविक शिक्षा और इसके अंदर फलसफा है, जो फिलॉसफी है, अगर हम उसको अच्छी तरह एनालाइज करके देखें, तो आप जो कह रही हैं कि रैशनलाइज करना चाहिए, रैशनलाइज ठीक है, लेकिन क्या ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन नेचर का मुकाबला कर पाएगी आपकी रैशनलाइजेशन? आजकल क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, ये तो बिगड़ता ही जा रहा है गेम। अगर आप रेशो उठाकर देखें तो देखिए कितने हायर परसेंटेज हो कि बुरी तरीके से लोग जो हैं, इतने ग्रीड, इतनी लालच उनके अंदर छुपी हुई है, हर चीज की बुरी बुरी तरीके से यूज कर रहे हैं। तो देयर इज अ बिग इम्बैलेंस एंड वी हैव गॉन टू अ स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। इस पे प्रकाश करें। absolutely. Sir, today we are celebrating Gandhi Jayanti. जी Okay. जी Of course, जी at the outset, I would like to wish everyone a very happy Gandhi Jayanti. जी But just celebrating anybody's birth anniversary is not enough. We must learn from their life. They are the legends. Gandhiji was one who focused more on the eternal value of the truth. He also emphasized the trusteeship, and his famous sentence, if we remember, that the nature has everything for humans' need, जी 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 but not for humans' greed. जी 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 This is such an important sentence and the teachings of his philosophy. And I feel even lockdown, our experiences are also our great teachers. I feel lockdown has taught us the difference between what are our needs and what are our desires. Very See, today everything is open, but during lockdown, all of us were at home. We were eating homemade food. We were not, after all this fast food and Zomato and all this, where we just on one click we can order the food.
But during lockdown, we have experienced that homemade food is so healthy, so cheaper in rate, and so reasonable, and how we can have that food along with our family members. जी So lockdown has taught us the difference between our needs and desires. जी 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 Earlier, we used to think that IQ, yes, it is of great importance. जी 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 Later on came the IQ is intelligent quotient. जी Later on came emotional quotient, how well I can control my emotions, or how can I show empathy to other person. Later on came SQ, not exactly the spiritual quotient, but a self quotient, how I can develop my own self, how I can, that is a bit of SWOT analysis, जी हाँ, how well I can accept my strengths, how well I can accept my weaknesses, and how I make the threats or transform the threats into the opportunities, how I can transform my challenges to the opportunities. So that is a positive attitude that we can develop among ourselves. But lockdown has taught us AQ, that is the adaptability quotient. The way life comes to me, I will accept, and then only positively I can face the challenges of life. Lockdown has taught us this AQ. Whatever was available, we were and we had to get satisfied with that. But that lockdown gave us the opportunity to be with our family members. It gave an opportunity to differentiate between our needs and desires. It gave us the opportunity how healthy habits we can develop. It gave us the opportunity to understand that health is of the greater importance. And definitely, I feel that due to lockdown, the transformation has taken place at the individual level and up to certain extent at the social level as well. And we must say that during those 2-3 months, the nature was taken care of automatically because zero cars on road, zero emissions in the air. Thank you. ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए, बुरी बातें तो बहुत रही, खूब चांटे पड़े, थप्पड़ पड़े, घूसे पड़े सबको लॉकडाउन के पीरियड में। बड़े बड़े कलंदर जो है वो अपने घुटनों पे आ गए थे। बड़े बड़े कलंदर बल्कि रोकर ये कहने लगे, किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन का, किसी को वो नहीं मिल रहा है। कितने बड़े बड़े लोग जो हैं वो दुनिया चले गए। No, that was a very difficult time. कुछ लोग, बल्कि मुजफ्फर वासी साहब का एक शेर ऐसे याद आया, बड़ा अजीब सा मजेदार चीज है इस पे, कि अब तो कुछ यूं हमें तस्वीर हमारी देखे, हार कर जैसे जुआरी को जुआरी देखे। इतना पिट गया था इंसान। लेकिन उसके बाद रिक्यूपरेशन हुआ, बाद में हमने सांसें ली। अब लोगों ने मिलजुल के पूरी दुनिया के अंदर एकता और संवाद पैदा किया, और ये सब कुछ ठीक रह रहा है। लेकिन मैं आपसे इस मौके पे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, उसको नजर में रखते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारी राइज इन कंज्यूमरिज्म और जो मटीरियलिज्म है, इससे हमारा जो इफेक्ट पड़ा है इम्बैलेंस एट इंडिविजुअल, सोशल एंड एनवायरमेंटल लेवल पे, इसको बताइए कि ये जो हमारा कंज्यूमरिज्म और मटीरियलिज्म बड़ा भयंकर तरीके से बढ़ा, और ना जाने ये कहां तक ले जाएगा हमें, और दुनिया कहां इससे मुतासिर होगी, और इसके अच्छे परिणाम तो इतने नहीं आते हैं, थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन दुष्परिणाम ज्यादा लगते हैं। इस पे कुछ नजरिया, रोशनी डालिए। Even when we talk about the scientists also, those who developed these atom bombs, nuclear bombs, जी 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 at the same time they were worried about the after effects of the wars. Because basically they are humans. जी 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 They were very much confident जी, that though it is a war between the two nations, ठीक बात है। their after effects are so detrimental, and they will definitely have an impact on the life not only of mankind but vegetable kingdom and animal kingdom. ठीक कह रहे हैं आप। I feel that there are three kingdoms: mankind, animal, and vegetable kingdoms. अच्छा, And we have been blessed with the brains. We have been blessed with the rational ability, so-called. Why I say so-called? Because see, for
animal survival, they are not dependent on us. For the vegetable kingdom survival, vegetable kingdom is not dependent on us. Okay? They are dependent on nature altogether. But for our own survival, the human kind is definitely dependent on animal kingdom also and the vegetable kingdom. आयरनी है। In जी 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 in spite of that, जी जी। we consider ourselves as superior, हाँ 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 which is not true. In fact, because we consider ourselves as superior, because with the help of scientific and technological advances, we are trying to grab or we are trying to control the nature up to certain extent. But in this process, we are exploiting the other two kingdoms like anything. We may take example of ceiling, because I am from Mumbai, I am taking this example. True. But I'm sure when the ceiling construction was going on, definitely the planktons or the aquatic life, definitely that must have come into danger. When we consider the expressways, okay, where the mountains are cut and the roads are built, why? Because mankind wants his journey to be very comfortable, the journey to get reduced in time, and he wants a very comfortable, fast journey. So this is the purpose of mankind. But he never thinks that when I cut the mountains, when I make the lavish roads for my vehicles, I'm encroaching the area of the animals. I'm encroaching बड़ी बात, on बहुत बड़ी area बात of है। vegetable. बहुत बड़ी बात है। And because of the cutting of the mountains, we are definitely observing and experiencing अपने a सुख के lot of लिए दूसरे दुनिया को दुख पहुंचा रहे हैं अपने सुख के लिए। और जो रेनफॉल का पूरा जो साइकिल है, टुडे इट इज गेटिंग कंप्लीटली डिस्टर्ब. द मेन रीजन is the cutting of the mountains, soil erosion. So these are, we name it as the natural calamities. But who is responsible for natural calamities? These are the human activities which are responsible for this. Today we face, as you are from Delhi, you must be facing a lot of pollution problem, particularly during this winter season, where the visibility is absolutely, it go to zero. So this is not just because of the climatic conditions, but it is because of the human activities. It may not be 100%, but definitely up to 70 to 75%, where the human activities are responsible for this. अच्छा डॉक्टर मनाली, जो हमारा तमाम मौजू चल रहा है, इसमें कई चीजें छूट ना जाए, और क्योंकि हमारी जो बातचीत चल रही है उसके अंदर कुछ एक पॉइंट्स मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं। एक तो वो ये है कि सिंस यू आर अ योगा एक्सपर्ट और योग में आपकी एक्सपोनेंट रही हैं उसकी, और साथ में फिलॉसफी यानी दर्शन यानी फलसफा उसका भी है, तो आप एक ऐसी चीज को जब सेल्फी विद आपने कहा रियल सेल्फी विद योग एंड एजुकेशन, इसमें अक्सर हम सुनते हैं IQ, EQ, SQ, AQ। एक आम आदमी को इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, और हमारे कई लोग जो हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट्स हैं, तो इसको थोड़ा तफसील में बताइएगा कि IQ, EQ, SQ और AQ जो है, इट इज नीडेड फॉर द टेमिंग ऑफ आवर माइंड, कंट्रोल करना अपने दिमाग को, तो योग के साथ और मेडिटेशन के साथ इस बिंदु पे आप अवश्य जो है प्रकाश डालिए। I feel that whatever the problems that we face in our life, those problems start with our own mind. Because even if our desires are fulfilled, then also we are not satisfied. जी 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 जी। ऐसा बोला जाता है, दिल always मांगे more. We are never satisfied. ऐसा जो हमारा दिल होता है, कुछ भी हम ठान ले कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो भी मुझे मिलता है तो मेरी इच्छा और आगे भागती है कि नहीं, अभी ये तो मिला है लेकिन मुझे ये और चाहिए।
So the human mind is never satisfied. सही बात है. When we do that, it is a vicious circle. And what happens if our needs, they are replaced by desires or greed, then it always impacts my thought process. और क्या होता है, मैं यदि समाधानी न रहूं तो मुझे ऐसा लगता है नहीं और कुछ करना चाहिए, और कुछ करना चाहिए. तो ये सब थॉट प्रोसेस में बहुत बार ऐसी होता है कि हम हमारे कर्तव्य ही भूल जाते हैं, जो हमारे खुद के प्रति है, जो हमारे फैमिली के प्रति है, जो कर्तव्य हमारे समाज के प्रति है, जो कर्तव्य हमारे नेचर के प्रति है, पर्यावरण के प्रति है. क्योंकि क्या होता है, मैं मेरे खुद के इच्छाओं में, आकांक्षाओं में बिजी रहती. And then if I start facing problems, then I blame my destiny. But किसी ने बहुत खूब कहा है कि try to concentrate on your thoughts because they will become your words. The words will become your actions. The actions will give rise to your habits, and the habits will become your nature, and that nature will determine your destiny. So हम यदि अपने थॉट प्रोसेस को वेरी क्लियर करें और जो हमें मिलता है उसमें भी समाधान पाए, because we should, I always feel that we should always count our blessings. क्या बात है. But हम वो नहीं करते. वो क्या करते, मुझे जो नहीं मिला है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते. इसमें जो अपने पास है वो भी हम अच्छी तरह से निभा नहीं सकते, वो भी हम अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन लगा रहता है अरे जो मेरे पे. वो एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे. तो इस रहते हैं तो मेरी साड़ी मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, जो मेरे पास है वो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी. So if we keep on comparing ourselves, the one who compares continuously cannot be happy, can never be happy. देखिए, मशहूर गीतकार और शायर साहिर लुधियानवी साहब का एक गीत अचानक से मेरे को याद आ रहा है इस वक्त कि मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिसका मोह करे. तो क्यों नहीं शांति से रहता. जैसे आप कह रही हैं कि आपको वो भी मिल गया, अरे नहीं यार वो भी चाहिए, अरे ये भी मिल गया, अरे भाई वो तो मन रे तू काहे ना धीर धरे. भाई धीरज क्यों नहीं धरता है, क्यों? So the mind is never satisfied. Mind is never satisfied. And I feel when we try to introspect, when we try to realize this, then we find the solutions of all our problems with our own self. लेकिन हम खुद के लिए टाइम ही नहीं देते हैं. We are busy. मनाली जी, इसी पॉइंट पे मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि योग के बारे में थोड़ा सा जरूर, क्योंकि हमारा जो इसमें है उससे हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं अपने कंट्रोल द माइंड और मेडिटेशन. योग का कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए. Yoga, the founder is Patanjali, Sage Patanjali, and he has given a lot of different stages, Ashtanga Marga, जो मेडिटेशन के लिए दिया है. ऐसा नहीं कि खाली ऋषि मुनि खाली मेडिटेशन कर सकते हैं. Even we also can do meditation. अच्छा. Definitely very difficult, but we have to start with calming our mind. Every day at least for minimum 5 minutes, if we try to be with our own self, definitely it can be formed as a habit. और वो 5 मिनट का आधा घंटा हो सकता है, वो आधे घंटे का 1 घंटा हो सकता है. And I'm sure once you do that, once you try to concentrate, because ये जो concentration है, being with oneself also is not easy. It is the most difficult time. एक योगा में आसन है, normally it is popularly known as Shavasana, but in the system which I follow, they call it as Chaitanyasana. Now it is lying down on the floor, okay, relaxing
all the parts of your body, including mind, and just feel that we observe each and every part of our body, right from the toe till our head, till the crown of our head. And then there is a continuous conscious process of relaxing that. And I'm sure that, of course, we should not go into sleep. That is the main condition, because then only we'll have a proper benefit of this asana. A very simple asana, anybody can do it, any time of the day you can do it. But this asana will have lot many effects, positive effects and advantages. So that we must train our mind. For that we have to train our mind. Only voluntary actions can become habit. Forced action cannot. And therefore, to continue with a good habit, it has to be first the voluntary action on our part. And therefore, we must give good time to our own self. I feel having the attitude of gratitude will help us in this. Gratitude खुद के प्रति, भगवान के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, फैमिली मेंबर्स के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने पर्यावरण के प्रति. When we are comparing it with science, technology, and our own life, because we are talking about self personality and self awareness. When we talk about the ecology and ecological balance, because our life is connected with every organism around us. For that, self-regulation, self-discipline is very important, and only yoga can treat that. See, yoga. So I feel along with Chaitanya-san, even pranayamas, which are a regulated, disciplined breath system, okay, that process also gives lot of strength. Nowadays we see, because of the pollution, because of the anxiety, even we don't breathe also completely, and then the lungs get affected. Therefore, pranayam helps us a lot in providing 100% oxygen to our body. And what I feel that something when it comes from via US, via developed countries, then we realize the importance of this. But yoga is our own tradition, our own culture. So it's better if we understand the importance of that well in time and get most benefited of it. Because even today also, if we see, yoga is well practiced even in developed countries, because the developing countries also, it has got its own challenges and problems at the individual level, social level, ecological level, and so on. But yoga is our own culture and tradition. I'm sure everybody would get benefit out of that. And particularly, even there is one called Sakshi Bhavana. Now, Sakshi Bhavana is that whatever the thoughts which come to our mind, we have to just observe those thoughts neutrally, without reflecting on it, which is also very difficult. But what we do, normally our mind is very biased. Our thoughts, mainly which are negative thoughts, that get piled up in our mind. Okay? And hence, to get rid of that, we must follow this Sakshi Bhavana. We must observe this thought as just how the water of the river comes and passes by. So as a third person, we have to observe that. And that will not have any negative impact on our mind, but which will definitely enhance our ability to accept. And that will also give the confidence that, yes, I have positive experiences as well. As it is, I always tell this to students, that nobody's life is full of petals of the rose. Okay, it is always with the thorns also. There is always a gray shade. Nothing is complete white, nothing is complete black. So we are not that beautiful as our WhatsApp or a Facebook profile shows. But we are not that bad
as our Aadhaar card also shows. Okay, so it is a combination of both, and we have to accept that. अच्छा, Therefore, I feel this yoga helps us to accept the way we are. It also helps us to analyze our own self, that is introspection. And on basis of that, whatever are the shortcomings, once we have this positive outlook and also the attitude of gratitude, definitely we can overcome our negative things. And in this process, there is a development of our own personality. Now, once we achieve that, definitely we should not be very self-centered. Okay, so what we have to do, we must realize what are my duties toward society, what are my duties towards the nature as well. And therefore, empathy plays very important role. Now, what is empathy? हाँ, That empathy is I must understand the other person. Suppose I would have been in his place, how I would have done, what would have been my reaction. So for that, you must practice endurance first. Now, what is endurance? As I'm the student of Bhagavad Gita and I'm done PhD on Bhagavad Gita, in one verse it is said, Sukha Dukkha Same Krutva Labha Labho Jaya Jo. That is, Sukha means happiness, Dukkha, which is like pain. But I observe Sukha and Dukkha similarly. It is at the equal level. I should not be get more excited with sukha, and I should not be depressed also with dukkha, because in both the cases there are chances that we might lose our differentiating power. We might lose the control on our thought. It is always said that when you are very, very happy, you should not promise anything. And when we are angry, we should not take any decision. Now, in both the processes, what is more important is control over your mind. Because when you are very happy, in that particular state of mind, you can promise anything which you may not fulfill in future. That is also wrong. And when you are angry, if you take any decision, that is also very wrong. We find so many cases after the results that the suicide, now suicide is not the solution of the problem. It is running away from the situation. So when you are depressed, when you are angry, you should not take any decision. And where you should not be alone, you should be with your beloved ones. You should be with your fellow beings. And therefore, I feel for any base of any relationship, the healthy communication, and that is not over the phone, that has to be one-to-one basis, that has to be in person. That is very, very important, and which is actually, unfortunately, it is getting reduced day by day because of the technology. And therefore, coming back to again self-realization, I feel that we must give a very strong, very serious thought to it, understanding the reaction and the response. Many a times what happens, we react, and that might create a problem. We should respond. What is the main difference between the two? When there is reaction, it is immediate. There may not be a base of thought process. But when we respond, there is a base of thought process. There is a prior thinking, and then we respond. I would like to share one story here. What happens that in one hospital, there is a rush of a crowd, and one father, his son is on the stretcher, and they bring him to the hospital, and then they ask for the doctor, and the nurse says that the doctor is at home. He has not reached yet to the hospital. Then this person becomes very panic, and then he starts screaming everywhere in the hospital, and he says that being the doctor, how he cannot be there in the hospital. His entire life has to be in the interest of the patients. He has to be here. Then the nurse calls, and she understands what has happened, but he tells the doctor to rush to the hospital immediately. The doctor also rushes to the hospital. The poor boy, he needs some surgery, a very small surgery, but the father is very panicked.
Then as soon as the doctor reaches the hospital, he is very angry on him. And then, but doctor is very calm. And then he takes the boy to the operation theater. Then he operates. The surgery is very successful. He comes back. He comes out of the operation theater. Still, the father is very angry. Doctor says, "Don't worry. Now your son is out of danger, and everything would be all right. I have to just leave. I'll be back after 2-3 hours." Then again the father says, "No, just now the surgery is over. How can you leave the hospital? Something happens with him." So doctor says, "No, there are other doctors also. I have guided him. I have guided the nurses also, and he will be under our observation." Doctor leaves. Afterwards, the nurse comes, and this father, he says, how this doctor is, how he can leave the hospital. And then the nurse tells him, today in the morning, the doctor's son met with an accident and doctor has lost him. Everybody is waiting for the funeral of his son. Unless until he reaches there, the funeral cannot start. See, this is the difference between reaction and Exactly, response. exactly. बहुत अच्छे एग्जांपल है आपकी, बहुत अच्छे एग्जांपल है कि विदाउट रियलाइजिंग द पोजीशन आप एकदम से दिमाग में जो आया बोल रहे हैं, ठहर के बोले। Unless bring our mind under control, we cannot respond. And for that, we have to train, we have to tame our mind, we have to calm down our mind, irrespective of what kind of the situation is there in front of us. And therefore, endurance is very important. Yoga helps us in bringing our mind calm. Between it will give us the strength to respond. It will give us the training that how we can analyze the situation, and then we can take any further action accordingly. So that is very important. And yoga, meditation, that definitely, Omkar sadhana definitely helps us, not only physically, but mainly the pranayam works on the mental process. Similarly, when we talk about the human nature, earlier also we thought when we were talking about the consumerism and materialism, again, the main cause starts with our mind, the cause of the problem. See, because once we are used to this lifestyle, change lifestyle, which is when we are at our comfort zone, we don't want to think about anything else. Basic human nature is right-centric and not duty-centric. Here I remember again the commercial which used to come on television, that a father is on the deathbed. Okay, and the son is beside his bed, but son is continuously thinking of the will that the father will prepare before he dies. Okay, because he is worried that once my father dies, what will happen with his property, what would happen with his wealth that he is going to leave behind. And therefore he makes the will prepared from a lawyer, and then he is making increasing zeros, wealth ka. And then there is a point of time comes where there is no space on the paper to increase any more zeros. So then he is now happy and he just leaves his father as it is. And the father dies. The son is not at all worried about it. And then he's very happy because he has a will of the father in his hands, and now he wants to go to the lawyer. He is coming out of the room. Unfortunately, there is a pipe above the door, which is where from the water is leaking. And then the drop falls on the first number. Now, that particular number gets wiped out. Zero the value of the bill remains as zero. That was the commercial of MSIL, which is used for care of the example. So this is where it is a difference between the right-centric and duty-centric. See, as a son, he must be more worried about his rights. As a son, what should I be doing? And how
care or what kind of care I would take about my father. But sorry, the duty centric, his duty towards father. But he is more interested in his rights. It is the human nature. We are always worried about our rights and not about our duties. I'm telling again that I don't want to generalize. There are sons, there are daughters who are taking very good care of the parents. It is generally said when from the society, when the old age homes and the child care centers will get reduced, that is the movement in the society. बहुत बड़ी बात कही आपने. Your life-centric and duty-centric approach that has to be understood well. And similar way, we have our duties towards society. We have our duties towards nature as well. When we do something, the construction we see around, even the mangroves are cut today and the reclamations are built up. See, this is very dangerous. But what we think, no, I should get place to live, irrespective of the comfort of the animal kingdom, irrespective of the comfort of the vegetable kingdom. But one day, we don't realize today that it is going to be very, very detrimental for the life of man. And I feel when we talk about the environmental ethics or ecology, we always learn about 4 R's: reduce, repair, reuse, recycle, and so on. But prior to that, I feel there are 4 C's which are absolutely important. Without curiosity, there cannot be science. Without creativity, there cannot be technology. Without competition, there cannot be progress. But if there is no compassion, everything will get destroyed. And I feel inculcating these eternal cardinal virtues in our own self, not just in our own interest, but in good sense for the society and also to take care of our mother nature. बहुत सही कह रहे हैं. When I was studying, I came across one very good sentence that nature always has the upper hand. Nature always bats at the end. You know, cricket match is very popular today. So nature always bats at the end but owns the stadium. I think it is self-explanatory. Nature will always bat at the end, but it will own the stadium. Irrespective of whatever the human activities are, nature will always have upper hand. Similarly, today Taj Mahal is considered as a very great architectural achievement, the progress, development. With the advanced technology and science, we can make another beautiful Taj Mahal, no doubt. But if the species are lost, the ecological balance is resulted, the science and technology cannot do. If we are losing the species, we are going to lose them forever. So many species of the animals, birds, we have already lost in the process of development, which we consider only for our own self. And therefore, I feel as a human being, it is the greatest responsibility that we owe on our earth, that to take care of the society and to take care of the nature. बहुत खूबसूरत आपने तफसील में समझाई सारी बातें. और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर मनाली लोंढे जो हैं, उनका बहुत ही एक गहन एक्सपीरियंस इसलिए भी रहा है जिंदगी के साथ और एजुकेशन के साथ, खासकर कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पहले गए थे, वो एक बहुत ही विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है. वहाँ की डीन रही हैं ये यूथ वेलफेयर की, और वहाँ का यूथ वेलफेयर का डीन होना एक बड़ा चैलेंजिंग बात है, और वो भी मुंबई यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है. अगली बात जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है, प्रोफेसर मनाली लोंढे, ये
अपने जमाने में करीबन 3 दहाई से पूरे इन्होंने जितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज इंडिया के जो हैं, उनमें खूब चक्कर लगाए हैं। मुझे याद है इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स, जिनको यूनिफेस्ट बोलते हैं, ये वो फेस्टिवल्स हैं जो कि शुरू में पंडित नेहरू ने स्टार्ट करे थे सन 54 में। और उस जमाने के जो कलाकार, आप कहोगे अरे मैं क्या बोल रहा हूं, उस वक्त से हरिप्रसाद चौरसिया जी, शिव कुमार शर्मा जी, गजल सिंगर जगजीत सिंह जी, डांसर कुमुद छुगानी जी, गब्बर सिंह, अमजद खां, उनका भाई इम्तियाज खां, यूनुस परवेज वगैरह वगैरह, एक से एक कलाकार। ये फेस्टिवल बंद हो गए थे थोड़े वक्त के बाद। फिर 1985 में रिवाइव करा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और जब ये रिवाइव हुए, यानी रेजरेक्शन हुआ फिर से, उस वक्त से लगातार ये चले और चलते जा रहे हैं। और उन फेस्टिवल से मैं आपको नाम बताता हूं: AR रहमान, आशुतोष राणा, विवेक ओबेरॉय, कपिल शर्मा, सुगंधा मिश्रा, भारती सिंह वगैरह वगैरह। देखिए लबों पे आते जा रहे, मैं 2-4 घंटे बीत जाएंगे, मैं बोलता रहूंगा। ऐसी ऐसी महान शख्सियात जो हैं यहां से निकली हैं। ये अखाड़े हैं यूथ फेस्टिवल्स के, जो तैयार करते हैं आपको रेसल करने के लिए, कुश्ती करने के लिए, कि भाई आपको अगर फिल्मों में जाना है, या एक सिंगर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, डांसर बनना है, या जर्नलिस्ट में बनना है, या एडवोकेट बनना है। बल्कि अभी तो मुझे याद आ गया, मैडम जो बैठी हुई, ये अभी मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले पढ़ा कि पंजाब के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं, वहां जो हैं वो हमारे स्टूडेंट थे जो कि डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे, आप ही उनको लेकर आती थी। और ये मतलब ये तमाम बातें मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये बताइए रोल ऑफ यूथ फेस्टिवल्स या दूसरी यूथ एक्टिविटीज जो है, और जिनको आपने एज ए मैनेजर भी यूथ फेस्टिवल में गई हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी एज ए जज आप रही हैं कई फेस्टिवल्स में, एज मतलब कोऑर्डिनेटर रही हैं, इवन होस्ट रही हैं वगैरह वगैरह। थोड़ा सा बताइए कि इस तरीके की यूथ एक्टिविटीज जो हैं, हमारा ये जो सेल्फी लेने का जो आपने बताया कि सेल्फी विद योग एंड एजुकेशन, इसी से ही टच करते हैं, क्योंकि ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ कल्चर को, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी हॉलिस्टिक जिसे कहते हैं, पूर्णतया हमारी, उसमें किस तरीके से, ये आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा क्योंकि आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें, बताइए प्लीज। जरूर जरूर। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ जो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़ी हूँ, जहाँ के स्टूडेंट्स बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट मोर देन 300 colleges participate in Mumbai University Youth Festival, and then it is such a difficult task to decide a contingent of 49 students for the zonal level, national level, and at the international level also in some cases. But yes, they have a lot of potential, and once we want to have just so many activities in these 5 major headings under debate, that is the literary events, fine art events, the theater, the dance, and the music, under which we can take only the contingent of 49, so every student has to be a multitasking student, and there is actually a challenge. And I'm so happy to share that right from Chanda to Banda, that is right from very, very like native place, remote areas, Mofusal areas, till the cosmopolitan society like Mumbai, Nagpur, Maharashtra, and so on, we get the students from the diverse background. But when the practice goes on for months together, 2 months, 2.5 months, 3 months, they always stay together. See, this particular activity gives them one thing is ability to adjust, ability to understand, ability to compromise, ability to coordinate, ability of cooperation, ability of helping each other,
because the goal is not just the self-performance or the individual performance, but it is the group performance. They are representing just not Mumbai or just not Maharashtra, but they are representing the university as a whole. And therefore, this self-discipline, the determination, the value of confidence, self-assessment, introspection, they learn and inculcate themselves through these activities of youth festival. And when they go and represent for at the national level, they get to meet the students from other states, where we just experience the huge diversity of India. I feel the harmony, the peace, all these are the values which are get automatically inculcated in the students when they participate at the national level. Because the diverse culture, diverse background, diverse tradition, and diverse, it is not just the experience of taking part in these activities, but we learn a lot from other students who come from the different states to participate in those activities. So it's not just a participation, but more than that, it is a learning process for the team manager, all the students of the contingent, and the leader of that particular activity. So it is a great self-enhancement, personality development at our individual levels also, not just for the students, but even for the teachers. वेरी नाइस प्रोफेसर मनाली लोंढे जी, एक बात और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं तकरीबन 30 साल से मनाली जी को जानता हूं, और आप की हॉबीज बड़ी अच्छी अच्छी हैं, खाना बड़ा अच्छा पकाती हैं, गार्डनिंग करती हैं, और बहुत अच्छी डांसर हैं। और अलावा इसके मतलब मैं बोलता लिस्ट बड़ी ओपन होती जाएगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बात जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही है और इम्प्रॉम्प्टू मैं इस वक्त पूछूंगा, याद भी दिलाऊंगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर साउथ एशियन यूथ फेस्टिवल हुआ। मैंने इनको डांस करते हुए देखा, मैंने वहां गाना गाते हुए देखा। एक जहन में मेरे को गाना आ गया अभी कि जो हम सेल्फी विद योग एंड एजुकेशन पे हम तबसरा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और आपका जो कुल मिला के जो टॉपिक वो ये आया कि आजकल के समाज में एक इंसान के लिए और विशेषकर यूथ जो है उसके लिए चलना बड़ा मुश्किल हो गया है, इस जिंदगी के अंदर संभल के चलना है। तो एक गाना मैंने सुना था आपसे बहुत पहले, ये काफी साल हो गए, गुरुदत्त साहब की पिक्चर आई थी शायद, आर पार, मेरे को याद आ रहा है वो पिक्चर का नाम, गीता दत्त जी ने गाया कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार है, बड़े धोखे हैं इस राह में, इस राह के अंदर बड़े धोखे हैं जीवन में, और आपको बिल्कुल सही से पके, इधर भी देखना, इधर भी देखना, इधर भी देखना, इधर भी देखना है, रोबोट नहीं बनना है, इंसान बन के ही एक एम्पैथी के साथ अपने जीवन को रियल सेल्फी उससे खींचनी है आपको, और अच्छे कैमरामैन बनना है, सेल्फी इस तरीके से। मैं गुजारिश करूंगा कि क्या आप ये गाना गा पाएंगी प्लीज इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए? आई विल बी ग्रेटफुल। मैं अचानक से पूछ रहा हूं, आप प्लीज तैयार तो हो जाएं। जी जी प्लीज। I would like to share here that as we are talking about selfie, one thing I learned from youth festival is that it is a festival, you know. So there is no like irsha of competition. It is a festival which we celebrate all together. And I always tell the students, if at all there is a competition, the competition has to be with our own self. So our performance has to be better than what we performed earlier. And therefore, it's a festival that where we all come together and celebrate. As far as this particular song is concerned, that it is a philosophy of life. उसमें एक लाइन है, नजर आते हैं अपने पराए, बाबूजी धीरे चलना. So our own experiences only will tell us who is our own and who is just pretending to be us. Okay, so that is a very good philosophy which is depicted in the song. Yes, I'll definitely try to just give me some minute to so that I can please adjust. Take your time. Karaoke.
बाबूजी तेरे चलना प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे है इस राह में, बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे है इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। क्यों खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ, बड़े धोखे है इस राह में, बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे है इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है यूं भूले भाले, करना दिल को गमों के हवाले, काम उल्फत का नाजुक वक्त है, आगे होठों के टूटेंगे प्याले। हाँ, बड़े धोखे है इस राह में, बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना, हाँ, बड़े धोखे है इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, हमले दूसरा कोई दामन, जिंदगानी की राहें अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ, बड़े धोखे है इस राह में, बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना, हाँ, बड़े धोखे है इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। Absolutely thrilling and fabulous, brilliant performance. बाबूजी धीरे चलना, गुरुदत्त जी, गीता दत्त जी, सबकी यादें आ गई। नाजरीन, Thank you so much. नाजरीन मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त सीधी जुड़ी हुई थी हमारे साथ प्रोफेसर मनाली लोंढे जी, और आज का जो मौजू था वो रियल सेल्फी विद योग एंड एजुकेशन। आप योगा एक्सपर्ट रही हैं, एकेडमिशियन हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आपका काफी है, और ये बहुत कुल मिला के हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी या ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी विद योग, फिलॉसफी, एजुकेशन, इन तमाम को लेके अपनी सेल्फी ऐसे खींचिए, ये आपके निर्देश थे। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मनाली जी। Yeah, I'd like to end with one example which all of us can follow in our life. Please. And I like the example of a pencil. जी जी, You know, so all of us know pencil because we have learned through that throughout our school life, college life, and now also we use it. The pencil is a very good symbol. There is a lead inside, graphite inside. If that graphite is not there, the pencil cannot be used. It cannot write anything. So graphite is where the there should be something within which should come. I feel that way. To hold the pencil, we need all our 5 fingers. We cannot live our life in alienation. We need the help and coordination, cooperation from everyone. The pencil is always with a sharpener, you know. So we must be ready to update ourselves, update our knowledge. Pencil also is always accompanied with the eraser. We must be very ready to
erase our earlier mistakes and go ahead, proceed further. We should not be committing the same mistakes, and we should learn from those mistakes. So erasure is very important. And with such a sharpened edge pencil, when we write on a paper, it always gives mark on the next page. I think that should be the objective of our life. Our life should be as such, which leaves the mark for the others to follow. Very nice. It is in a enlarged canvas that we will be having our contribution for the society and environment. I'd end my talk with one verse from the Bhagavad Gita, which says that there are ideals, there are role models, that their life itself, because that is a legendary life, itself is an example which makes a mark for the others to follow. Yadyad acharati shreshthastad devetaro jana saya pramana kurute lokastad anuvartate. Thank you so much, sir. And I'm very grateful to Sampson, sir, because I have learned a lot from him. He is very, very lively, enthusiast, and I'm sure all these youth festivals, the National Youth Festival, Zonal Youth Festival, even the International Youth Festival would not have been successful without his leadership, his encouragement, and his motivation. Thank you, sir. Thank you very much. तो दर्शकों, आपने सुना प्रोफेसर मनाली लोंढे जी को, और आखिरी में अहमद फराज साहब की इस आखिरी कुछ दो एक शेर से मैं खत्म करना चाहूंगा इस प्रोग्राम को, क्योंकि जो हॉलिस्टिक पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए लोग आंख भर के देखें, यार ये कौन आ गया कौन। तो कहते हैं कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, और सुना है जब वो बोले तो उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, चलो यूं है तो उससे बात करके देखते हैं। ऐसी खूबसूरत, मेहरबानी है आपकी बहुत बहुत, और एक बारी फिर से गांधी जयंती आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनाली जी, सो ग्रेटफुल, सो थैंक यू। बोलते आईने, बोलते आईने।